Good evening, everyone. Good evening, good evening. Good evening, Imran. Good evening, Varun. Good evening, Rakesh. Good evening, Sajid. Good evening, Nilesh. Good evening, Samath. Good evening. Keep the charts clean. We'll start in 2 minutes, guys. Hit the like button.
टीजी ग्रुप का ट्रेड एमटीएसएल स्टार्ट कर लो सब लोग. गुड इवनिंग रचित. Everyone from the TG who has taken the trades, execute the MTSL. On the break of this candle, the target will be of this point of action, okay? 29 for 29.39 will be the first plan of action post the break. First target hit ho chuki hai, which is of 90 pips. Second target is of 150 pips. Okay. Recipe book at what scenario you took the trade? I haven't seen any setup yet. S2. Good evening, Rashid. Recipe book at what price you took the orders? 9 a.m. candle and 10 a.m. candle. वो कोलकाता टाइमिंग पे बोल रहा है, इंडियन टाइमिंग पे बोल रहा है. U2C पे उसका एग्जीक्यूशन पॉइंट यहाँ पे था. This was his first execution point, and then its next execution point was here. Okay, two trades he has taken. Next target is 82,000. Sorry, 81,600. उसके बाद next target is 81,080 on the break. Okay, Hansji. Hope it's clear. Just give me a moment, guys. We'll start. Good evening, Samat. आपका मॉर्निंग वाला लॉन्ग का ट्रेड क्या हुआ? Hansh ji, how many points did you close at? BTC buy order. Yes, buy order. आप इस पॉइंट ऑफ एक्शन में बोले थे मेरे को कि 800 पॉइंट में MTSL रख के जा रहा हूं मैं करके. ये रेड कैंडल पे 83,630. सॉरी, ये रेड कैंडल पे. Okay, guys, let's start. Yesterday लिया था. हाँ, वही वो वाला ट्रेड ही. Daily, when we start chart analysis, we should start with daily candle, then 4 hours, then 1 hour, and so on, right? Yes, that's right. Close कर दिया था 800 points. Okay. Same scenario. The reason of trade short. आज भी सेम सेटअप क्रिएट किया था. सर्कुलेटिंग सप्लाई. मार्केट हर एक रिटेलर को इस पॉइंट ऑफ एक्शन में बिठा रहा था. मेजरली इस पॉइंट ऑफ एक्शन.
right? As explained, Nilesh, what did the market do at this stage? जो 8 घंटे का मूव है 15 मिनट का 2 कैंडल में कंप्लीट कर दिया. Okay, coming to the daily analysis. ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल. हमारा ऐसे ही TP2 हिट हो चुकी है at the current scenario. What is the next plan of action? On the break, we'll be looking the trades till 29:36. ये TP2 कैसे निकाला था? I'll come to that point of action. Guys, ऐसे ही हमारा TG का TP2 यहाँ पे हिट हो चुकी है. लवली ट्रेड, लवली मूवमेंट, लवली प्लान ऑफ एक्शन. S2 का मूवमेंट थी. एग्जीक्यूशन पॉइंट आके 29:49 29:48 पे थी. उसके साथ मूवमेंट हैज गिवन ए गुड मूव. ग्रेट. ओके, सो नाउ अभी हम एनालिसिस पे आ सकते हैं. नो वरीज एट ऑल. ये TP2 कैसे निकाला था? आ रहे इमरान, वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट. Okay, so let's start with daily screening, guys. On a daily screening, what is the first major thing that we'll be looking at? आज के दिन में हमें विक क्रिएशन चाहिए था. विक क्रिएशन मिली. मार्केट ऊपर के लिए कंटिन्यू हुआ. Post that, we identified a S2 in 15 minutes. With the S2 plan of action, the trade was executed. उस point of action से we have recovered 130 pips. That is a really beautiful moment and target is hit. Okay. What is the next plan of actions that will be working out at the current stage? At the current stage, the only plan of action that you will be working is aligning the point of actions. Previous demand कहाँ पे है? This is our previous demand. With the previous demand, let's allocate the next point of action, जो कि हमारा retracement point के साथ बना था. With this retracement कितना लिया था? जितना हमारा previous closure, उतना ही यहाँ पे retracement build हुई थी. Then market had continued the demand. Continuously movement था तो double करेंगे हम demand को. And market had taken a rejection at this point of action. Okay. जैसे ही market ने rejection लिया, what is the next plan of motions that we will be working on? The current supply will be multiplied at this point of action and allocated into previous retracement point. जो कि what has market done? From where the market is taking the rejection? The market is taking the rejection from the plan of action of the previous supply.
अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में दो चीज आपको नोटिस करना है। मार्केट में रिट्रेसमेंट कितना आया, जितना हमारा प्रीवियस रिट्रेसमेंट क्लोजर था उतना ही प्रीवियस रिट्रेसमेंट यहाँ पे बिल्ड होते हुए दिखी, राइट? The building point of the previous retracement was at the range of this. The same movement which was carry forwarded over here, the same will get carry forwarded at this point of action. कितना मार्केट मूवमेंट दिया था उतना ही उसी पॉइंट ऑफ एक्शन से मार्केट ऊपर के लिए मूवमेंट दी. Then now what is the next step that we'll be working on? We'll be working on 4 hours. In 4 hours, what are the major things that we'll be working over here? What are our previous markups? How will you identify the previous markups? जितना हमारा मेजर पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पे बिल्ड हुई थी उतना ही प्रीवियस रिट्रेसमेंट के साथ मूवमेंट अलोकेट हुआ था. उस मूवमेंट के साथ कंटिन्यूटी, रिट्रेसमेंट ऑफ द प्रीवियस अलोकेशन एंड द नेक्स्ट सप्लाई वाज कंप्लीटेड, राइट? रिजेक्शन पॉइंट कितना था? ये हमारा प्रीवियस रिजेक्शन था. उतना ही यहाँ पे हमको फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन में मिली. जैसे ही फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन कंप्लीट हुआ, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ एक्शन मार्केट कंप्लीटेड द सेकेंड रिट्रेसमेंट ओवर हियर. परसों के दिन हमने फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन शॉर्ट की तरफ देखे थे बिकॉज दिस वाज द टारगेट लाइनअप. विद दिस टारगेट लाइनअप क्लोजर हुई, मूवमेंट, completion. With the completion, again the demand got multiplied. Post the retracement point, market जाके closure लिया था, and this was the major reversal area of mathematical concept. Post this mathematical concept, what is the next thing that you will be working over here? The next thing you guys will be working over here is on the priorities of the current supplies. Current supply may, do we have a circulating supply? Yes, definitely we do have a circulating supply. This is a major supply. Post that we got a circulation over here at this point of action. जितना movement of action build हुआ था, जितना इस point of action में movement build हुआ था उतना ही circulating supply के बाद plan of action build करके target hit किया है, right? The 4 hours target is also at the current stage hit. What is the next thing that will be working over here? The next thing will be working on the retracement. Previous movement mein retracement point was this candle, the supply will get converted into demand at this stage. Once the supply gets converted into the demand, what is the next plan of action that you can work on? Allot the mathematical concept 2.0. Okay, so the 2.0 formula क्या है? स्विंग हाई स्विंग लो को माइनस करो, उसमें से फॉर्मुलेटिव नंबर निकलेगी. थ्रू दैट फॉर्मुलेटिव नंबर we will look for an allocation point with the retracement. Market bullish है तो we will add, market bearish है तो subtract करेंगे. With the golden ratio and the intermediate ratio, with that plan of action you will get the targets. We will allocate the same targets at the current range of action. Okay, so in this scenario, what are my current plans? This is my swing high, this is my swing low, and this is my retracement point, right? In this retracement point, what is the bullish scenario indicating towards us? The bullish scenario is indicating the swing high point is 2922.225. Swing low is 2880.310. Retracement point is 290 2906.110, राइट? फॉर्मुलेटिव नंबर आके 41.915 है, गोल्डन रेशियो आके 8973, उसके बाद इंटरमीडिएट रेशियो आके 8980. That is the next plan of actions that we'll be working on, right? Because swing high is 2922.225, swing low is 2880.310, retracement point 11. Yes, perfect.
So हमारा targets of 4 hour swing trading volume के लिए, what is the plan of action that will indicate? The golden ratio number is at 8973.92. And what is the next intermediate ratios that you will be getting? The intermediate ratios that you guys will be getting over here is, excuse me guys, 2989.94. These are the two plan of actions that is allocated for the ratios of the 4 hour swing traders. This is the levels. Post this level, what is the next plan of action we'll be allocating for? The next plan of action we'll be allocating for is 1 hour. 1 hour में, what is the major motions that's indicated towards us? Do we have the movement of circulum? Yes, definitely we have the movement of circulum. This was our first supply. Completion of this first supply, market moved on to the second. Post that, or on today's scenario, this was the first target point of action. With this target point of action, the movement was allocated. On the completion of first supply, second supply was created, second supply target was hit, then the movement had continued. At this point of action, we have multiple ranges. We do have POI range, we do have multiple ratios allocated, right? So यहाँ पे हमारे पास POI range भी है. Excuse me guys, we do have a POI range over here build up, right? We do have a formulative movements, circulating supplies. So at this point of action, what is the first thing that you will be working on? First thing you will be working on is the current movement plan of action, जो कि आके हमारा swing high point ये होगी, swing low point ये वाला होगा, retracement point will be of this. Sorry, swing low, swing high, and retracement. Let's calculate the bullish scenario again. 2922.225 is the swing high. Swing low is 2897.585. Retracement point as 2909.095. What is the formulative number? Formulative number is 2464. Post 2464, what is the golden ratio that market has created at the current stage? The market has created a golden ratio of the point of action 2948, जहाँ पे market rejection ली है, उसके साथ intermediate ratio आके 2958.375 है, right? So this is the plan of actions that will be working out at the current scenarios of the market. अगर market 2948.96 level break होती है, intermediate ratio 2958 100 pips ऊपर फिर से जाएगी. Got it, guys? So in this plan of action, let's mark out the major levels. So I've just kept the formulative number over here marked so that you guys don't get confused. So this is the formulative number of today's scenario for bullish sentiments. What is the next plan of action that we'll be working on? Market कहाँ तक next 15 minutes में generate होगा, right? And if you notice, where is the market taking rejection at the current scenario? The market is taking rejection from 2948.965, right? This is our major rejection as per the formulative number, right? With this point of action, what is the next step that we'll be working on? Let's come down to 30 minutes. What is 30 minutes indicating? 30 minutes is indicating a equal highs, there is a group inducement, there is a movement of allocation. But अगर notice कर रहे हो, यहाँ पे हमारे पास circulating supply build हुई थी, right? With this circulating supply, what is the first plan of action that market will tend to do? Market will tend to hunt them out. Okay, जो कि at the scenario हो चुकी है. What is the next plan of action?
Let's allocate the supplies. With the supplies, we'll allocate the measurements. And measurements of the markets as per the previous supply. This is the current previous supply. With this previous supply, we will allocate the movement towards the long post the retracement. Retracement कितना लेता है market? जितना allocation point रहती है उतना ही movement of allocation यहाँ पे build होते हुए दिखेगी, right? So what are the next steps that will be working here, guys? The next step we'll be working over here is in 15 minutes. In 15 minutes, इमरान आपने पूछा था ये टारगेट कैसे निकाले थे, right? Because inducement S2 create हुआ था, S2 के साथ फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन हमेशा यही रहता है, जितना प्रीवियस डिमांड, राइट? इन दिस सिनेरियो ये हमारा प्रीवियस डिमांड था. With this previous demand allocation, what is the next step that we'll be doing? Market in a go break हुई थी, multiply with the multiplication, we had kept the plotting over here. With the plotting point, 50% is a markup area. Market had took the rejection from the same point. Clear, Imran? Any doubts, guys? Gold. किसी को भी डाउट है गोल्ड के ऊपर, प्लीज डू आस्क. Sajid, good evening, Sajid. S2 is nothing but an inducement range where we look for a reversal areas to execute the trades. Okay. Yes, clear now. Hit the like button, guys. Everyone clear? We'll move to the next point of action, BTC. All clear, sir. Yes, clear now. Nilesh, clear है? Entry was in the green candle. Entry was in the red candle and the green candle, both. Okay. With this plan of action, let's just move to the next point of action, which is BTC. Is clear. इस पॉइंट ऑफ एक्शन इंड्यूसमेंट कहाँ से बनी है? इंड्यूसमेंट यहाँ पे ही बनना शुरू हो गया था. ग्रुप का टाइमिंग देख लेना. यहाँ पे हमने मैसेज किया था ग्रीन कैंडल एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन पे एग्जीक्यूट. दिस वाज द प्लान ऑफ एक्शन. ओके. ये S2 मूवमेंट के हिसाब से बिल्ड हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट कमिंग डाउन टू BTC. BTC में कोई भी लॉन्ग की तरफ देख रहे हो एट द करेंट स्टेज, प्लीज मत देखो. इंड्यूसमेंट बिल्ड होने दो विद द इंड्यूसमेंट्स ओनली. Let's start allocating the levels for BTC. BTC previous demand allocation. Previous demand allocation के साथ post inducement allocation. Post inducement allocation के साथ ये हमारा previous break था. With this previous break, this was our mathematical number जहाँ से market rejection लिए, right? So we are marking out that levels. So post marking out that levels, what is the next step that we'll be working on? The next step we'll be working on at the current internal liquidity point. Internal liquidity point mark करने के बाद what is the next step? We will allocate the demand. जितना previous demand है उतना ही circulating में movement generate होते हुए दिखेगी.
With this point of action, what do you notice? Closure, copy. Closure and break, right? Post closure and break, what is the next plan of action that we'll be working on over here? Market कितना retracement लिया है? जितना हमारा previous allocation point था उतना retracement यहाँ पे allocate हो चुकी है, right? With that allocation point, what is the next step that we'll be working on? The next step we'll be working on over here is 4 hours. What is 4 hours indicating at the current stage? The 4 hours is indicating market bearish sentiment. The wick creations are towards the bearish sentiment. At the current moment, let's allocate the previous demand movements. This is the first demand range. Post the demand closure, the market had given a movement from this point of action. Market ने complete करके continuity में गई थी. So we'll be marking out the double, which is 50% range. So जैसे ही 50% range mark out हुआ, market ने एक rejection लिया था as per the previous supply. So previous supply हमारा ये वाला point of action थी, वो वाला point of action will be marking it over here. Continuity में target कितना allocate होगा? जितना हमारा previous moment of action है. In this scenario, this is of previous moment of allocation. This allocation point will be looked at the current supplies. With this, we'll multiply this demand and allocate it. Right? Post allocating the previous demand, what is the movement that you're looking for? A proper rejection. We got a inducement partner 1, partner 2, and a break. Suppose that we will multiplying the first demand of that segment in the continuity. What do we notice? We notice a rejection. With this rejection point of view, market took a retracement again. कितना मार्केट रिट्रेस हुआ? जितना हमारा प्रीवियस प्लान ऑफ एक्शन था उतना ही यहाँ पे फिर से आपको रिट्रेसमेंट दिखने को मिलेगी. Post that, market took a rejection point of action, completion and execution. Right? The market has sustained at the point of action. With this point of action, we'll allocate the mathematical numbers at the current stage. The mathematical numbers of 2.0 for BTC will be, this will be your swing low, this will be your swing high, this will be your retracement point. This is for swing traders, not for intraday. So what is the swing high? 82,670.39. As the swing high, swing low is 76,606. Retracement point is 79,058. What is the formulative number? The formulative number that you have got is 6064.39. The golden ratio number is at 88,870. .18. The next plan of action will be looked at the intermediate ratio, which is at 91,186.78. Two levels has been marked for the daily time frames and the swing traders. This will be the next plan of action that we'll be looking for. At this stage, let's come down to 1 hour. The people who are looking for executions. What is the stage action that we'll be allocating over here? Plan of action number 1 multiplied plan of action number 2. Where is market taking rejection? From the 4 hours completion of the supply. Post supply completion, let's come down to 1 hour. 1 hour may, what are the major things that will be working over here? First major thing that will be working over here with a small retracement point towards the long, that the retracement low remains the same.
Swing low remains the same. Swing high is at 80,559 and retracement point at 80,112. Allocate the formulative number at the current stage. Swing high is 80,547.79. Swing low is 7606. 76606. Retracement point is 80,099.32. What is the formulative number that you have got? The formulative number that we have got is currently at 3941.79. With that, the golden ratio numbers is at 86,477. 86,477.13 is our first target for the intraday people. Okay. So this is our 1 hour target where the market could tend to come at the current point of action. Intermediate ratio and 4 hours golden ratios के बीच में सिर्फ 600 पॉइंट का डिफरेंस है, so I'm not marking the intermediate ratios. Suppose this plan of action, what is the next step that we'll be working over here? Let's come down to 30 minutes. In 30 minutes, what is the next plan of action that we'll be working over here? The next plan of action is allocating the previous supplies and the demands. At the current stage, the first moment of allocation of the demand was over here. With this demand allocation, the second demand allocation was over here. And the third at the current stage. Moment, let's allocate it post the POI range. The inducement partner movement over here, 1, completion, demand doubled, allocation. With this point of action, 50% will be the first ratio point. The market couldn't break below that. Okay. So with this, what is the next step that we'll be working over here? The next plan of actions that we'll be working is, did the scenario of the 12th worked with the plan of action of the supplies? So supply 1 gets into the consideration of supply 2 gets in the consideration of supply 3, right? With the supply 3 plan of action, market took a rejection in today's moment. With this plan of action, let's come down to 15 minutes to allocate the major level points. To allocate the major level points in 15 minutes, let's look into the first bearish scenario moment. Swing high, ये complete हो चुकी है. We will take the next point. This will be our swing low. And this one as the retracement point. Right, let's mark out the numbers that we are looking for. The numbers that we are looking here for the swing high is 84,336.33. Swing low is at 83,542.53 and the retracement point is 83,700. What is the plan of action? The formulative number is 793.8. With that 793.8, what the market has done, we have got a golden ratio of 82,415. Where is the market currently at? The marketly currently at the point of action of the moments, right? So this is the moment allocation point. अगर notice कर रहे हो तो golden ratio आके 82,415.36 है. Where did the market took the rejection at the current stage? From the same point, right? With this point of action, अगर inducement create होती है, we will look for the plan of action towards the long.
And how will be the long allocations looked at? The long allocations will be looked at in the covariance of previous movement. Okay. So if you allocate the movement point of action, this is your first demand completion, first demand was this. My bad, guys. First, on this point of action, we marked out the second. On the second, we had marked out the third. On the third, we have marked out the fourth. On the fourth, we have marked out the previous supply. This is the previous supply that we had worked on. इस previous supply के साथ moment of allocation जो build हुई थी, that is at this point of action worked here. Market ने break लिया, break लेके sustain होने के बाद what did market trend to do? Double the supply, target hit. Post that, what is the first plan of action? The first plan of action जितना हमारा demand range है उतना वो यहाँ पे allocate होगी with this range. Market gave a break with the single go. Plan of action number 2. With this plan of action, market had come back to the range and market is giving a movement towards the down. This is our first demand at the range. Post completion of the first demand, we will look for the second. Post completion of the second, what is the next plan of action that will be working out over here? Plan of number 1, plan of number 2. Right? Market has completed the range break. With the range break plan of action, what is the next step? We have got a S2 range built over here. With the S2 range, we have got a creation, closure, wick creation and continuity. Target will be as per the levels of the previous measurements that we'll be looking in 1 hour. So 1 hour का previous measurements यहाँ पे आके notice करोगे. What are the previous measurements that will be working over here at the first stage of action? The first stage of action, previous moment of allocation will be this. And second plan of action will be this. So these are the 3 major targets that we'll be looking over here, allocating at the point. Okay. Target 1. Did I miss a moment? Yes, definitely. 3. Any doubts in this current plan of action? This will be only with the inducement generation closure. This is the plan of actions that we'll be working on, not prior to that. Okay. अगर market surplus break होता है, surplus golden ratio break होगा तो it will come down till 22,112. Any doubts? Can you please explain?
Why these three lines are drawn? No, these three lines are for me. Okay. Good evening, Mahesh. Once you finish with the screening, I have one question. When you are calculating MC2, sometimes the market dips below the retracement levels, but you ignore the dips. Yes, definitely I will ignore the dips. Why did you kept the swing high same in BTC in 15 minutes chart and changed the retracement and swing low making? Because the movement of the surplus is too small at that point of action, Samarth, so the swing high remained the same. Okay. Imran, clear hai? Anshji, clear hai? Rachit, clear hai? Hit the like button, guys. All the new members, welcome to the stream. जो भी doubt है पूछिए. Back testing, forward testing, live testing करते रहिए and बने रहिए. If you're learning with the stream, if you're liking it, do hit a like, share, and subscribe. Beautiful, guys. On the break, the next plan of action is to the intermediate ratio of 29.58. Lovely. Inducement के साथ proper movement allocation. Scenario 2 S1 building creation हुई है यहाँ पे. Bullish one, sorry. Scenario 2 bullish one and a movement. Once the market breaks, next target is directly at 29.58. Clear? Yes, sir. Yes, clear. Clear है. Can you please explain why did you mark that long supply here in BTC? Step by step, Samarth. Step by step. सर ये अज्यूम करना पड़ता है क्या प्रीवियस डिमांड सप्लाई कब कौन सा अप्लाई होगा या फिर नियर बाय रहता है नियर बाय अज्यूम करना नहीं है देयर इज नथिंग कॉल्ड एज assumption in the markets. Okay, this question is when drawed that supply in daily candle. Which question? Three supply lines was drawed in 15 minutes ना daily time frame पे तो हमने draw किया ही नहीं.
Sajid, hope you got how we trade. Can you please explain why did you mark that long supply here in BTC? This is when you draw the supply in daily candles. What are you talking? This supply is marked as per the previous one. Sorry, ये नहीं. What are you getting confused here? Where is the confusion here? Say me the time of the candle where I have marked off what, please. Okay. नीलेश inducements clear हो रहा है? How does inducement scenario 2 works? Okay, please let me know which time it is. Yes, sir, हो रहा है. Trying to look at as many scenarios as possible. Great. Okay, समझ बता देना अभी. वरुण TP2 से ज्यादा मत देखना BTC में. The black line marked between
This is a demand. So this marking is of POI range. ये POI range का marking है. This is the entire POI range, right? So this is the POI range marking what we have done. Okay. Mahesh, hope your doubt has been cleared. Sir, can we buy gold if there is a retracement? The market is going with the retracement only, no? Also, while making, we need to mark from body to body, or we need to include the wick also. Depends on the scenario. Inducement 2 follow करके गया ना महेश? It followed inducement 2, right? So that should be in your plan of action that could add worked into the market states. The next plan of action that you can work on over here is on to the previous inducement range break, जो कि at this scenario is this point, right? One candle closure continuity पे आती है, that's when you will look into the circumstances. Okay. Only one clarity that you need over here is the point of action. कितना point of action में movement generate होती है? If there is another candle break, then you will get this retracement for sure over here. Okay. Only thing is you do have to have a second red candle coming in. That's when you will allocate this demand. Not prior to that. Yes, sir, because the dip is from the new swing. रचित, बैक टेस्टिंग करते वक्त कोई डाउट्स आ रहा है पूछो. फॉरवर्ड टेस्टिंग करते वक्त कोई डाउट्स आ रहा है पूछो. Sajid, whatever doubts you're having, please do ask, and from how many months or years you're trading, do let me know. Rakesh, please do ask whatever doubts you're having. इमरान, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है?
मुझे डाउट्स है लेकिन वो कल के स्ट्रीम से क्लियर है, तो एक दिन का टाइम चाहिए रिवीजन के लिए। ओके, फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हो? आर यू डूइंग द फॉरवर्ड टेस्टिंग रचत? गो चार्ट में। बैक टेस्टिंग कर रहा हो? फॉरवर्ड टेस्टिंग भी स्टार्ट करो रचत। यूज गो चार्ट एप्लीकेशन एंड डू द फॉरवर्ड टेस्टिंग रिले में। तीन तीन कैंडल्स पकड़ने के लिए आप माहिर बताते हो, मैंने कब बोला मैं माहिर हूँ? 1 मिनट का 3 कैंडल्स कोई भी पकड़ सकता है। जनाब आपके हिसाब से ये 1 मिनट है ना, तो चलो, आपके हमारे हिसाब से 1 मिनट दिखाता है। ओके, तो ये हमारे हिसाब से ये हमारा 1 मिनट है। लो सर, दिस इज आवर 1 मिनट। ओके, so we don't execute the trades here, we analyze the trades। एक दो तीन कैंडल में एग्जिट करने वाले ट्रेड्स हम पकड़ते ही नहीं है जनाब। कुछ भी बोलते रहते हैं। क्या टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? ओके, टाइम फ्रेम भी छुप गया है। ओके, कोई बात नहीं। So this calculating demand or supply is just in perspective of retailers or big players as well. As in BTC 1 hour Indian time 11 March 7 Indian time 17:30 12 8:30. These candles are always having big volumes. That is always about the circulating supply. I'll showcase you that. Give me a moment. Kolkata BTC 7:30 12. Which point of action? 15 minutes, you know? 1 hour. Okay. And this 1 hour scenario, what is the next thing that we'll be looking here? 12. Guys, allocate the next plan of action as per the mathematical numbers. First target hit हो चुकी है, continuity में आई है। 12th 1930 1930 well, 1930 was a reversal area, no? We took this trade also, no, Nilesh? And 2030. Yeah, this and all are huntings, no? To hunt. कुछ भी बोलते रहते हो। नहीं, तुम्हें नहीं नीलेश। एक कमेंट आया है टेलीग्राम पे, उसके लिए बोल रहा हूँ। स्विंग हाई, स्विंग लो, रिट्रेसमेंट पॉइंट 84,336.33, 82,851, retracement point 82,851.
only on the sustainability. Okay. So if you want to understand better, no, Nilesh, let's come down to 15 minutes of your same timing. There is some issue with chats. I have posted 3 messages. I don't know how many got delivered, and when they do it, always mess up the order. Okay, let me check. You have delivered 3 messages. Sir, when we say circulating supply, we saw in last two BTC trades where you said the price will come to hunt circulating supply before the next move and did it. Okay. So this circulating demand and supply is just in perspective of retailers or big players as well. As in BTC 1 hour Indian time 11th March 7:30 and 12th March 8:30. These candles are always having big volumes. And wick, do we count as circulating supplies or just pro volumes or how that works? Yeah, now I got your question, right? Always remember one thing. Guys, मैं drawings हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए. जनाब इतना ही प्रॉब्लम है ना आपको, जहाँ पे आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो ना वहां पे जाओ, हमें प्रॉब्लम ही नहीं है. Okay, so here I'm removing the drawings for some time. Major levels mark कर लेना. So with this plan of action, what is the major thing you guys have to notice? Right? Let me make you an understanding. First, let's come down to the circulating supply points. Right? So this is the circulating supply one. Okay? And आज के दिन में circulating supply कहाँ पे है? इस point of action पे था. Correct? पूरा नहीं था, but था. So इसे same point of action, let's come down to 15 minutes for better analysis. Okay. So what did 11th do? From this point of action to this point of action, what was the market trying to do? Making retailers sit, right? Same point of action, what did the market tend to do at this point of action? Same thing. What did in today's scenario market tend to do? Same thing, right? Why? Retailers will not have that much of capable egg ratios to handle it. Egg ratios matlab, what is the egg ratios known as? Egg ratios is known as a price action of 1 is to 10. Okay. So this ratio is looked into the perspective of an intraday. Okay. So this is not a movement 1 is to 10. This is a movement of your risk management. राइट अगर आप $1 डाल रहे हो क्या आप $10 का रिस्क ले सकते हो is the point of question market tends to ask you. But abhi in this scenario let's calculate the ratios of the movement. Okay, so what the market has done from this point of action to this point of action, what is the ratio? 1119. Okay, which is equivalent to 1 is to 10. Let's come down to the second ratio. Where is the movement? By 1 second here. Yeah. Okay, थोड़ा ऊपर आ गया है, but that's totally fine. Right? What is the ratio over here? From this point of action to this point of action, 1145, 1 is to 10. Right? And what is the current ratio that we'll be looking over here? 1 is to 6. Never or ever market will tend or the retailers tend to have a position allocation with 1 is to 10 risk to reward.
right? So 1 is to 10 risk to reward is known and allocated at only two circumstances, which is in the point of action of reassurance, right? Reassurance मतलब अगर मार्केट में रनिंग में जा रहे हो ट्रेड पे, राइट, यहाँ पे रिटेलर्स को पता ही नहीं है कि लाइक उनका हर बार रनिंग में जाते हैं, छोटा एसएल लेते हैं, फिर से एंट्री लेते हैं, करेक्ट? So what does market tend to do? The ratio of 1 is to 10 is covered in the portion of each and every circumstances, right? That's how the circulating gets. That's how the major swap generates, right? यहाँ पे swap generate करेगा उस point of action पे. जब यहाँ पे swap generate करेगा, what does the big players do? The big players will look for a merging leverage. Okay, when the merging leverage is used, the market will tend to wait. 1 is to 10 ratio होने तक market wait करेगा, right? जैसे ही 1 is to 10 ratio आता है, उस point of action से it will at one shot of range it will drop. It will create a panic in the market. What do you notice? How much was the drop over here? 3000 points, which is equivalent to 3x, sorry, 30x, right? So 30x movement में क्या panic create होगा retailers के अंदर? Definitely yes, right? So what is the panic creation over here that has been built? 3000. What is the panic movement that it has been built here? Sorry, yeah. Which is currently in the movement. वो ले ही नहीं रहा है ढंग से. मैं क्या करूँ, नहीं ले रहा है. Right? So this is the panic movement situations where it tends to create retailers getting in FOMO, right? Move that magnet. Okay. Nice, yes. Thank you so much, Nilesh. Right? So at this point of action, the retailers get panicked, right? FOMO में executions देखेंगे. जब FOMO में executions देखेंगे, what will market try to do? बिठाएगा. हर एक point of action में बिठाएगा. बिठाने के बाद mathematical number allocate होगी. उस नंबर के साथ एक बड़ा सा कैंडल जनरेट होते हुए दिखेगी. वहां पे वॉल्यूम भी सरप्लस में दिखता हुआ दिखेगा. With the surplus, sorry, with the surplus of the same moment, the market will reverse. With the surplus of the same moment, market will reverse. Okay, so this is what the market does in a circulating supplies. So merging swaps, merging allocations, right? Wherever you see a movement in a parallel channel, समझ लेना वहां पे market definitely एक reversal होगा. So these are all new terms. कहीं सुना ही नहीं था एक रेशियो. Yes. So how to identify it? समझ लेना जहाँ पे पैरेलल चैनल वर्क हो रहा है वहां पे एक रेशियो जनरेट हो रही है. Okay. Just for an example, let's draw this parallel channel. Right? What did market try to do? First indications retailers को market movement देगा.
मूवमेंट अलोकेशन के साथ रिटेलर्स को यहाँ पे बिठाएगा, राइट। बाद में मार्केट कंटिन्यूड द मूवमेंट, पोस्ट कंटिन्यूटी ऑफ द मूवमेंट क्या किया, मार्केट ने ब्रेक दिया, राइट, ब्रेक कंटिन्यू, ओके। यहाँ पे रिटेलर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से 95% ऑफ द रिटेलर्स टेंड टू होल्ड ओनली 100 to 200 पॉइंट्स, right? They will not hold any much more than 300 points, right? 400 पॉइंट के ऊपर वो पकड़ लिए ना, उनके दिल के अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं। सर ऊपर से गुजर गया है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, उधर भी आ रहा हूँ। यस, राइट। सो दिस इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। सो द टारगेट्स स्टिल देयर, 2958 तक, वहां तक मूवमेंट है। ओके सर, लेट मी डाइजेस्ट दैट। व्हाई आर यू लाफिंग? भाई इस बंदे को भरोसा मत करना, आपका पैसा उड़ा देगा। ओके, डन, जैसे आप बोल रहे हो। ओ सॉरी, सही से नहीं पढ़ा। भाई लोग, भाई, भाई लोग, भाई लोग, ओके, भाई लोग। 1 मिनट का 3 कैंडल को वो बोल रहा है 15 मिनट का कैंडल है। कहाँ से टपक पड़ते हैं यार। नाइस बेटा, फन। एनीवन हैज एनी डाउट्स, प्लीज डू आस्क। नहीं नहीं यार, कभी कभी ऐसे रहना चाहिए लोग, मजा आता है। Sir, you bomb a lot of info in a single go, so we have to digest it first. Okay. लास्ट टाइम एक महेश करके कोई आया था ना, ये महेश 2.0 है क्या? पता नहीं। उसका नाम है रोमियो। टेलीग्राम। बट इट्स फन ना। सो 15 मिनट, एक 15 मिनट का एक 1 मिनट कैंडल सोच रहा है, 1 मिनट का कैंडल इतना स्लो जाएगा क्या? 1 2 3 4 करके। सर थोड़ा चुम लोग होते हैं, इग्नोर मारो उन्हें। सर जिंदगी में बहुत इग्नोर मारता हूँ सर मैं। एंड तोफसिफ, हाउ आर यू? हाउ इज योर लर्निंग गोइंग ऑन? हाउ वाज योर डे एट वर्क? वेंट वेल? Hit the like button, guys. Mahesh was fun. Yes, he was funny. Funny as fuck. सर माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है, आपका दिमाग हिल गया वीडियो देख के। सर माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है, आपका दिमाग, ओके, माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है आपका दिमाग हिल गया वीडियो देख के, ओके, गॉट इट। गुड इवनिंग ऋषभ।
All the new members, welcome to the stream. जो भी doubt है पूछ सकते हो. If you're learning from the stream, if you're getting educated through it, do hit a like, share, and subscribe. सर मैं अभी आया हूँ, कोई एंट्री ट्रेड्स है क्या अभी के लिए? अभी के लिए टारगेट्स का वेट करो. S2 सिनेरियो बिल्ड होने दो, नहीं तो सिनेरियो 2 बिल्ड होने दो, उससे पहले नहीं. ओके. ओके, तो सर प्लान ऑफ एक्शन बिल्ड होने दो, उस प्लान ऑफ एक्शन से एग्जीक्यूशन देख लेना. नो डायरेक्ट एंट्रीज. तब तक के लिए ऑल्ट ए प्रेस करो, अलर्ट लगा दो, अलर्ट लगा के बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लेना. they just want to see big they just want to see big profit screenshots with huge lot size capturing only couple of points and saying kabhi kabhi lagta hai apun hi bhagwan hai. Nice. And what is the huge lot size looks like?
अगर उनके हिसाब से हम 1 मिनट में ट्रेड करने लग गए हैं ना, हमेशा हमारा ट्रेड्स चार्ट फाड़ के जाएगा. So this is how the screen will be looking. Every time it will be out of the screen. हमारा 15 मिनट्स में ही चार्ट फाड़ देता है कभी कभी. सो फनी. गाइस, बैक टू वर्क. सब लोग बैक टेस्टिंग करो. जो जो ट्रेड नहीं कर रहे, जो जो ट्रेड कर रहे हैं, एमटीएसएल फॉलो करो. ओके. गाइस, 1 मिनट म्यूट में डाल रहा हूँ. मार्केट बी लाइक नितेश भाई की टारगेट दिया है. मेरी छवि किधर है, मुझे जाना है. चल गाड़ी स्टार्ट कर. मार्केट बी लाइक नितेश भाई ने मार्केट बी लाइक नितेश भी मार्केट बी लाइक नितेश भाई ने टारगेट दिया है. मेरी चाबी किधर है, मुझे जाना है. चल गाड़ी स्टार्ट कर. वो सिर्फ मेरा नहीं है यार. हर एक हेज फंड, हर एक इंस्टीट्यूशन का सेम फॉर्मूला है. हल्का हल्का मुल्का ऊपर नीचे है. राइट. वो हल्का मुल्का जितना भी है ना, वो भी पता है कितना है. हमारा 1.618 में क्लियरली क्यों रखा हो, क्योंकि दैट इज द एग्जैक्ट फॉर्मुलेटिव नंबर ऑफ ए गोल्डन रेशियो, सो दैट आप लोगों को आसान हो जाए वो समझने के लिए. हेंस वो ही रखा हूं मैं. हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट इज नॉट ऑफ 1.618. आर एग्जीक्यूशन पॉइंट इज ऑफ 1.617 and 1.619. Noticing one thing in this circulating supply hunt, it tends to capture every single bit of it in last three hunts. It went till the last supply even today. So this is how it is always behave. So this is how it always behaves. Or there are many other scenarios.
Nilesh, there are seven scenarios. In that, this is one of the major scenarios. Okay. Sir, any learning video will be released this week? Yes, Sunday ko. Every Sunday you will have a learning video. Okay. भाई 15 मिनट में रहे यार. यो अगस्त्या, दैट्स माय बॉय. कितना हुआ टोटल आज का? स्क्रीन शेयर कर देना एक बार. आई एम सॉरी एलटीडी मेंबर्स, 2 दिन से पूरा टाइम नहीं दे पा रहा. ए लवली मैन, लवली. कीप इट अप. दैट्स द ब्यूटीफुल हार्ट. गाइस, मनी कैन बी मेड बाय एवरीवन. एक चीज याद रखना, मनी कैन बी मेड बाय एवरीवन. Repeating it for the second time. Right? In that everyone, it can be a doctor, it can be an engineer, it can be a security guard, it can be a CEO, it can be a startup owner, it can be anyone, right? Even a housemaker gets monthly allowances through the hubby, right? Everyone can make the money, but only 2.7% of them knows the art to multiply the money. Okay, so work on multiplying the money. Don't work on one fixed source. One fixed source will not help you guys. Learn the art of multiplying. Multiplying is nothing but compounding. Okay, तो सिर्फ अगर कैंडल क्लोज होती है, क्योंकि you are new and you're still in a learning stage, I do know that you need some of the funds. अगर एक कैंडल रेड में क्लोज होती है बीटीसी में, विद दैट कंटिन्यूटी में रिजेक्शन लेके आती है क्लोजर के साथ, तब एक ट्रेड अलोकेशन देख सकते हो. ओके. Mahesh, did you execute the trade towards the long? 140 pips running, great. इमरान, कोई ट्रेड अलोकेट हुआ है? हंस जी, कोई ट्रेड? Rachit, you have only 21 days left. ओके. आपके प्रॉमिस के हिसाब से.
Nitesh, BTC is working on S2 scenario, right? Yes, yes, Arundhati ma'am. S2 scenario में है. Sir, why do you trade in 5 minutes? Trade in 1 minute. Sir, this is not 5 minutes chart. This is 15 minutes chart. Please don't get confused. कर लेगा मेरा भाई रचित. वो मेरे को भी पता है वो कर लेगा. आपका बताइए ऋषभ. गोल्ड में कम इंड्यूसमेंट बनता है लेकिन बीटीसी में डिफरेंट वेरिएंट है इंड्यूसमेंट्स के. सर, गोल्ड में इंड्यूसमेंट सिनेरियो 2 के ऊपर काम करो 15 मिनट में हमेशा बनता है. S2 वेरिएंट पे काम करो. ओके रचित. मैड फिट मोटिवेशन इंटरेस्टिंग है बट कुछ समझ नहीं आ रहा है. फर्स्ट जाइए मैथमेटिकल एज 1.0 देखिए. फॉर द मूवमेंट्स ऑफ गोल्ड concept 2.0 for each and every market you can utilize that formula. इंड्यूसमेंट का वीडियो देखिए. उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड का वीडियो देखिए. स्क्रीनिंग का वीडियो देखिए. कम बैक टू अस. राइट. ऊपर ऊपर से आपको एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखने को मिलेगी. विद दैट अंडरस्टैंडिंग यू कैन स्टार्ट लर्निंग इन द लाइफ. ओके. मैड फिट मोटिवेशन आपका नाम क्या है प्लीज बता दीजिए. यू हैव अपलोडेड ए न्यू वीडियो ना. उसके वजह से यू हैव अपलोडेड ए न्यू वीडियो ना. उसके वजह से स्पैम हो रहा है टेलीग्राम पे. नो सर, आई मिस्ड इट इन द मेजर रिजेक्शन सो डिड नॉट एग्जीक्यूट. नो वरीज एट ऑल. सर, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे. ठीक है. डेफिनेटली यार, यू कैन टेक इट. नॉट एट ऑल. नो वरीज. बट एक चीज, ये सभी लोगों के लिए है. राइट. जितने भी लोग यहाँ पे स्ट्रीम देख रहे हैं, वक्त चाहिए करके पूरा वक्त मत दे देना. राइट. Everything has a time, and there is a myth what everyone follows. मेरा टाइम आएगा.
Okay. So in this scenario, there is only one thing, मेरा टाइम नहीं आता है, मेरा टाइम खुद बनाना पड़ता है. अगर आप 9 घंटे काम कर रहे हो, 2 घंटे ट्रैफिक में घर पहुंचने के लिए दे रहे हो, राइट, 1 घंटा टाइम खाने में फैमिली के साथ दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो, कोई बात नहीं है. दिन का 1 घंटा निकालिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, but 1 hour to work on something new. Let it be trading, let it be business, let it be workout, let it be music, let it be your hobby. 1 hour a day can make you better than 99% of the people in the world. 95 है, 99 mindset होना चाहिए. Okay, please work on this, guys. Very important. What happened, Mesh? Sir, can you shift the screen? जी sir. So true. Yes. 40 more pips for the targets of gold, guys. 29.58. We need 40 more pips. Beautiful break, guys. Beautiful. 30 more pips. चलो चलो टारगेट हिट करो. TP1 हिट हो चुकी है. जो हमारा सप्लाई मार्क्ड आउट था, वो सप्लाई का लेवल अलोकेशन कंप्लीटेड. With the level allocation, next movement is for 2958.541. Okay. Hit the like button, guys. All the new members, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो. Be in the trading screen, Dinesh. Lovely, guys. Good moment. Dinesh, trading screen पे जाओ. आप हो तो ट्रेडिंग कितना आसान है.
क्यों पहले मुश्किल था क्या? एक और चीज याद रख लेना, ट्रेड fearlessly, following the risk management, no emotions while you are in the trade. हारने से दुखी मनाना, जीतने से खुशी हो जाना is not the quality of the traders. Have a poker face on and enjoy the game till you reach the top. Hey Sagar, how are you? 20 more pips for the targets, guys. The intermediate ratio 2958.375 is just 20 pips away. Is that true? If we take withdraw from Forex trading, next day accounts will freeze and legal actions will be taken against us. Which country are you trading from? Not in Dubai, not in Asian countries. इंडिया में अगर यूएसडीटी के हिसाब से काम कर रहे हो, yes, no, you won't be facing any issues. Beautiful, guys. तुक्के में ट्रेड लिया एंड तुक्के में टारगेट हिट हुआ. जो तुक्के में ट्रेड लेते बोलते हैं ना, तो जाके हर एक लाइव स्ट्रीम देखना जनाब, हर एक ट्रेड तुक्के में लिया है, हर एक ट्रेड तुक्के में हिट हुआ है. इंडिया से हो, अगर आप इंडिया से हो तो डोंट यूज क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स. ओके, use P2P transactions or else open a business account. Right, in that business account you can allocate and show the transactions as the business. Okay, but direct account पे मत लेना, freeze नहीं होता है account, right? Because you guys are not trading in the high volumes. Beautiful, guys. ऐसे ही चलते चलते तुक्के में ट्रेड हिट हो गया. हाँ, ग्रेट गाइस. एमटीएसएल फॉलो करो, ब्रेक होता है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो एग्जिट. वर्षा, इन लोगों को कुछ करे यार, प्लीज. Okay, Tosif, make sure that you don't take withdrawals on the debit card and as well as not in the credit card. Okay, so P2P transactions करना, वरना account transactions करना, online bank through the business. Okay, open a business account, current account से transactions allocate करो, show it as business transactions. Okay, capex account के साथ. After previous short trade in the gold, there is S2 formed. So as per the formation, 19 candle was the entry point, right? Indian timing, 19. Yes, 19 का candle में close कर सकते हो. Else you can work on this candle only post the closure above this. Right? Inducement candle जो है ना, scenario 1 का, S2 scenario 1 bullish movement का, उस point of action में you can look for an execution. Okay?
सर हम ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर बहुत छोटा वर्ड है. Great guys, MTSL follow करो. The next plan of actions, the next moments. TP1 hit हो चुकी है. Let's allocate the next moments, guys. So the next bullish scenario will be come down to 1 hour. What are the previous swing highs and lows? Swing low was 28.97. Okay. So इस point of action में next plan of action we will move it as swing high this, swing low this, retracement point this. Okay. So the swing high is 29.48. Sorry, 29.40.371. नहीं नहीं MTSL follow करो. Okay. So with this point of action, the swing high is this, swing low is at 2906.669, then retracement point is at 2930.073. So our next plan of action is this. गुड इवनिंग SRK. हेलो सर. BTC नेक्स्ट मूव कैलकुलेशन बताइए. डेफिनेटली बताएंगे. एक सेकेंड वेट कीजिए. ऑलरेडी अलोकेटेड है. अगर हल्का सा रिवाइंड करके देख लोगे ना दिख जाएगा. बट गिव मी 1 minute, आई विल शोकेस यू अगेन what is the next plan of action that we'll be working. Okay, just give me a moment. Beautiful guys. Next upcoming target is 2974. Sorry SRK. SRK. This is for you, man. Okay.
This is the numbers that we are following at the current stage. Please follow the same. Okay, got it. किसके लिए okay, got it? हाँ, इंड्यूसमेंट के बारे में पूछे थे, करेक्ट? राइट. ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल. सर, तुम तो ऑपरेटर निकले. ऑपरेटर नहीं, नहीं, हम ऑपरेटर नहीं है. ये दो दो बार मैसेज आ रहा है यार. सॉरी सर जी. नहीं, डोंट हैव टू बी सॉरी एट ऑल. इमरान, हाउ मेनी ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड? प्लीज लेट अस नो. एस आर, एस के आर सर, नॉट एस आर के. ओके. बट अच्छा है ना, तीनों वर्ड्स है उसमें, सो इट डजंट हार्म दैट मच, राइट? एनीवेज, अगर बुरा लगा है तो सॉरी. तुमने 2974 का लेवल कैसे निकाला? तुक्के से ही डाला होगा. भाई, वो तुक्के से ही डाला है, तुक्के से ही हिट होगा, देखते रहे. जितने भी लोग बीटीसी में हैं, फॉलो द प्राइस एक्शन गाइस. एमटीएसएल स्ट्रॉन्ग रखना. गोल्ड में जितने भी लोग लॉन्ग में हैं, एमटीएसएल फॉलो करो विद द एमटीएसएल पॉइंट ऑफ एक्शन. allocate it above 150 pips. इसके यार मिल जाएगा आपको, ठीक है? सब लोगों को मिल जाएगा. उसमें और थोड़ा चीजें ऐड कर रहे हैं, उसके साथ आपको मिल जाएगी. One in BTC short running now with 1200 pips. Great Imran, great. Keep it up. गोल्ड मिस कर दिया, कोई बात नहीं है. That's totally fine. तो सिर्फ होप यू हैव आल्सो sat in the gold trade. जहां से आप बैठे होंगे वहां से 300 पॉइंट्स मूवमेंट में है. 280 pips running and 1900 in BTC. Keep it up. Good job, Imran. Great work. नहीं नहीं, मैं स्मिता ना, मैं तो मस्त इग्नोर किया. बेचारे, आई एम फीलिंग पिटी फॉर देम बिकॉज कि लाइक they are not seeing the real trading now. All the new members hit the like button. जो भी डाउट है पूछिए.
तुक्के तुक्के में 2970 टारगेट हिट। लो जनाब, नेक्स्ट टारगेट इज 2974, वो भी तुक्के में ये लगाया। डायरेक्शंस में कोई भी ट्रेड ले सकता है। एक भी ट्रेड हमने रनिंग में ले लिया है, ठीक है। अगर तुम पीओआई रेंज में जाके देखोगे, फ्रॉम फेब, कौन सा डेट ऑफ रेंज है वो, यस, फेब 8 से लेके, सॉरी, मार्च 8 से लेके मार्च 13 तक जो मूवमेंट्स अलोकेट था वो पीओआई रेंज में था। उस पीओआई रेंज में हमने 150 200 पिप्स निकाले, जाके देख लो। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शंस। नहीं नहीं गाइस, एमटी एसएल at 2965, ट्रेलिंग एसएल at 2964, राइट। अगर थोड़ा बड़ा रिस्क लेना है तो सिस्टम ट्रेलिंग एसएल यू कैन कीप इट एट 150 पिप्स व्हिच इज 2959। थोड़ा बड़ा रिस्क लेना है तो टीपी1 पे रख सकते हो योर ट्रेलिंग एसएल, एमटी एसएल at 2965। Sir, I have seen all the gurus on Imran. I am not guru at all at first place. Okay, I'm just a trader like you guys. Sir, I have seen all the gurus on YouTube and mostly they are fake. They are doing it for their feed sake. Yeah, I don't have any comments to say to them. So, I don't want to say this comment loud and hurt their sentiments as well. So yeah, sorry. I feel that what you said, Naim Ram, I can feel that. Do we count the current move also as circulating supply, or the move has to be gradual with small candles? आपको एक रेशियो देखना है। एक रेशियो मतलब पैरेलल चैनल में जाना चाहिए मार्केट। किस सिनेरियो में बोल रहे हो? बीटीसी में? नो, दिस इज नॉट द सर्कुलेटिंग सप्लाई, दिस इज फॉलोइंग द प्राइस एक्शन। ओके, अब क्या हो गया वरुण? नहीं नहीं स्मिता मैम, चलने दो ये ट्रेड।
मार्केट विल कम डाउन नेक्स्ट एट 7450 सोलाना, वहां तक होल्ड करेंगे। सर एक डाउट है, पूछो ना। अगर एमटीएसएल में मार्केट नीचे, अगर अगर एमटीएसएल में मार्केट एमटीएसएल पॉइंट से, अगर मार्केट में एमटीएसएल पॉइंट का नीचे आके क्लोजिंग नहीं देता है, विक क्रिएट करके जाता है, तो ट्रेड क्लोज करना है या बने रहना चाहिए? बने रहना चाहिए। जब तक एमटीएसएल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एट आर सिनेरियो कहाँ पे है, यहाँ पे है, करेक्ट। मार्केट यहाँ पे आके विक क्रिएट करके ऊपर जाती है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन you can be there. Once the market closes below the MTSL point, you can exit. Okay. Okay, sir. I'm talking about gold. The big candles you cleared that as to move in a channel cleared. Okay. अगर notice कर रहे हो, what are you seeing over here? Golden ratios are always calculated 1:10 in the parallel channels. Okay. So these are the hunts. How to identify the end of the circulating supply? एक ही दिन में सब जानना है आप लोगों को। Definitely I'll teach you. Did I say I'll not teach? I'll teach you. इतना बड़ा रिजेक्शन में भी तुम ट्रेड होल्ड कर रहे हो क्या? कितना बड़ा रिजेक्शन? 2970 से 2967 तक गया है। 30 पिप्स को इतना बड़ा रिजेक्शन कह रहे हो? हमारा एसएल 40 पिप्स का है। क्या रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो? वर्षा, प्लीज डू समथिंग फॉर दिस गाइस यार। कितने साल से ट्रेड कर रहे हो जनाब? 8 years in Indian, 4 years in crypto and forex. Hacks off to you, sir. Appreciate it. मतलब overall 6 years of experience in the markets, right? Great, great. Honestly, they'll say I'm happy that you have stuck in the market for 6 years. However, you are talking, that's totally not an issue. Okay. But I really appreciate that you have stuck in the market for 6 years. टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? अरे जनाब, इसमें प्रॉब्लम है। टेलीग्राम पे नीलेश। एंड कभी कभी टेलीग्राम क्या करता है ना, वो डायरेक्टली टीटीएस को भेजे बिना एलटीडी का जो पर्सनल वन ऑन वन सेशन मैसेज होता है ना, वहां पे आता है वो। कभी कभी ग्लिच के वजह से यहाँ पे आ जाता है, सो मैसेज मेरे को डायरेक्टली दिखता है। तुम कितने साल से ट्रेड कर रहे हो?
देख के तो लगता नहीं है तुम 3 महीने के ऊपर से ट्रेड कर रहे हो। सर मैं कहाँ बोला मैं 3 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने तो लाइव शुरू करके 2 हफ्ता नहीं हुआ है। मैं 2 हफ्ते से ट्रेड कर रहा हूँ सर। आप कहा 3 महीने। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए मेरे से। Guys, almost on the break. 29.74. The next target will be hit in next 10 seconds. अगर ब्रेक होता है तो इस कैंडल में क्लोजर दे देगा। Anyone has any doubts, please do ask. 1 मिनट का कैंडल्स हटा के 15 मिनट या 1 घंटे में करके दिखाओ मानूंगा। सर ये चार्ट 15 मिनट का है सर। क्या बात कर रहे हो। अरे जरा। Sir, I'm feeling sad. What were you doing for 6 years in the market? गाइस ज्यादा ग्रीड मत दिखाओ। MTSL पॉइंट 2967 पे लाके रख लेना। राइट, TSL पॉइंट 2964 पे रख देना। अगर इस पॉइंट ऑफ एक्शन में इंड्यूसमेंट सिनेरियो बिल्ड होती है एस टू बेसिकली, ओके, S2 बिल्ड होती है तो जितना हमारा करंट POI रेंज था सुबह वाला उतना मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फिर से। कितना POI? दिस इज आवर POI रेंज, करेक्ट। इतना मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। सॉरी, माय बैड। ओके, अगर इंड्यूसमेंट सिनेरियो 2 बिल्ड करती है, राइट, देन यू कुड सी a retracement अगेन। ये क्या है लाइंस? नहीं सर, मेरा ट्रेडिंग व्यू सही से काम नहीं कर रहा है। मैं ऐसा ट्रेंड लाइन जाने जा रहा हूँ ना, वो ट्रेंड लाइन ऐसे डालने के बजाय ऐसे बैठ जा रहा है सर। तो मैं क्या करूँ अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में, बताइए। सो फनी नितेश। यस सर, आई एम एंजॉइंग इट। मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ बोलो। SKR आ रहे, आपका ही मैसेज पे आ रहा है नेक्स्ट। नहीं, दैट्स अ रियली गुड जॉब अंजलि, कीप इट अप।
सर बीटीसी का बताइए। अच्छा ही तो चल रहा है बीटीसी। ये टारगेट तक आएगा बीटीसी। हाँ, तुक्के वाला टारगेट तक ही आएगा, हाँ। हाँ, यहाँ तक आएगा। ओके, सो एक ही सिनारियो है, एसकेआर, राइट? ब्रेक सस्टेनेबिलिटी में मार्केट मूवमेंट चाहिए। Once this breaks, okay, this is your previous demand allocation. This allocation will get placed into the current scenario. Okay, SKR, this is your plan of action. इमरान MTSL को 28, सॉरी, इमरान, वरुण, सब लोग MTSL को 82 to 86 पे लाके रख लो। सिस्टम ट्रेलिंग को 82 700 पे रख लेना, 700 या 600 या 500, either number works. Okay. अगर मार्केट ब्रेक करता है, then the target will come down till 80,407. सर, जो भी आपका नाम है मिस्टर रोमियो, थैंक यू हंसाने के लिए, धन्यवाद। तो सिर्फ ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। सर पिछला बार जैसा पीएनएल दिखा दो, खुद डिलीट कर देगा। भाग जाएगा, सदमे में रहेगा। नहीं यार, पिछला बार तो छोटा था नंबर, इस बार बहुत बड़ा है। गोल्ड का रहने दो, बीटीसी का रहने दो, दोनों भी बहुत बड़ा है। पिछले बार का जो नंबर्स था, दैट वाज ऑफ 100 पिप्स, राइट? गोल्ड में मार्केट इज रनिंग विद 450 पिप्स हमारा स्विंग ट्रेड। बीटीसी में हमारा ट्रेड 84 400 से चल रही है। बीटीसी शॉर्ट रनिंग, कहाँ पे एंट्री लिए हो हंस जी? सो बीटीसी में रचित हमारा 4000 पॉइंट्स प्लस चल रहा है। सो द नंबर्स आर नॉट वेरी स्मॉल, बहुत छोटा नंबर्स है, दिखा नहीं पाऊंगा। तो सिर्फ, हाउ इज योर ट्रेड रनिंग? ब्यूटीफुल रिजेक्शन गाइस, कीप इट अप। 82 188, 600 पॉइंट्स रनिंग में है। 400 MTSL, 200 पॉइंट्स में सिस्टम ट्रेलिंग, हंस जी, ठीक है। मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है यार, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये मेरे को टारगेट हिट करना है। वो बीटीसी आराम से आएगा नीचे तक। सिर्फ एक ग्रुप बनाइए, अपडेट नहीं मिल पाता है डे टाइम में। मैंने 85K का टारगेट रखा था, आपने 84 400 से सेल किया, मुझे पता नहीं था, वरना एग्जिट
करके सेल में बैठ जाता। कोई बात नहीं है। इसके आर। ओके। एंड इसके आर एक चीज हमेशा याद रखना, 85,000 तक का ही वेट मत करो। आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन था 79,000 से, राइट? 79,000 से जब आप बैठे हो, व्हेन यू आर गेटिंग 7,000 पॉइंट्स इन अ मूव, sorry, not 7,000, 6,000 points in a move, 500 points shouldn't matter for you. Okay, so ये ध्यान में रखना कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपको विक जनरेशन दिखती है टारगेट्स के पास, तब एग्जिट करना चाहिए। 500 पॉइंट की ग्रीड में मत रहना उस समय पे, ठीक है? एंड कल आपने एग्जैक्टली exactly जो मैं कहा था वो फॉलो किए। आई रियली अप्रिशिएट दैट, राइट? सप्लाई के ऊपर ट्रेलिंग करके चले, टारगेट तक आया मार्केट, राइट? सो उस पॉइंट ऑफ एक्शन में नेक्स्ट टाइम से जस्ट मेक श्योर दैट यू एग्जिट द ट्रेड्स एट द राइट पॉइंट ऑफ एक्शंस। इसके आर, हाउ डिड यू रिमेम्बर दैट ही हैड टेकन अ ट्रेड एट 79,000? नहीं स्मिता मैम, उनका मैसेज लास्ट में आया था ना, तो याद है। Because he came yesterday evening session at the end, so he said that he had sat in a trade, in a swing trade, because he is the only one who is there in the swing trade in the live. So number याद था। Okay sir। हाँ। And best part about SKR was उनका एंट्री कहाँ पे थी पता है? वो एग्जैक्टली यहाँ पे आके पूछे थे, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में मैं क्या करूँ, ट्रेड में बने रहूं या एग्जिट कर दूं छोटे प्रॉफिट्स के साथ, राइट? हिज एग्जीक्यूशन वाज हियर। That was the beautiful thing. So I remembered him. So यहाँ पे हमने सप्लाई ड्रॉ किया था। कौन सा सप्लाई ड्रॉ किया था पता है? ये वाला सप्लाई ड्रॉ किया। ये सप्लाई डबल क्वांटिटी में अलोकेट किए थे। अगर वो ब्रेक होके सस्टेन होती है, बने रहना करके बोला था हमने। सो मार्केट ने ब्रेक करके सस्टेन हो गया था, सो ही सैट एंड ही वाज देयर इन दैट ट्रेड। भाई साहब, आपको तो इन डिटेल्ड पता है। लाइफ इज टू शॉर्ट टू फॉरगेट थिंग्स गाइस। ब्यूटीफुल। ऐसे ही हमारा आज का दिन का हर एक टारगेट TP1 से लेके TP2 से लेके TP3 ऑल है, एंड TP4। TG का ये शॉर्ट रेट थी 100 pips। With this 100 pip of action, we close this inducement trade with a whooping 290 pips. Keep it up everyone. Great job. Keep learning, keep growing. You guys are one step ahead for your financial freedom. BTC ब्रेक हो जाए यार, मजा आ जाएगा। एक ब्रेक चाहिए, टारगेट हिट हो जाएगी। Nilesh, you can start executing now with a smaller quantity. Okay. How many trades you have taken? Last trade was your gold, right? उसके बाद ट्रेड नहीं लिया था ना?
Great guys, break हो गया है. The target will come down till the mathematical numbers. Sustain हो जाने दो, मजा आ जाएगा. Yes, only one trade so far gold. कोई नहीं. अगर if you want to, नहीं आपका नहीं हुआ है ना अभी तक. Complete 1,000 charts, then only. 2,250 points running. ग्रेट गाइस. गोल्ड में जितने भी लोग हैं नेक टू नेक एमटीएसएल लेके चलना. टारगेट हिट हो चुके हैं. You knew the entry analysis given to a random member of the TTS family in the live stream. How is that even possible? It's a hard-earned money what he has invested in the trade. अगर गलत analysis देता याद नहीं होती. सही analysis दिया हो याद. Sustain होना चाहिए. वो एक ही thing है यहाँ पे. Once it sustains, boom. अगर wick create करेगा तो मजा नहीं है. How is your learnings going on, Mahesh? Any doubts you're getting? Hats off, sir. All the new members, welcome to the stream. जो भी doubt है पूछ सकते हो. Do you trade in gold? Yes, we do trade in gold. How to learn your concept? Look into the video of Mathematical Edge 1 for gold and Mathematical Concept 2.0, right? With that, look into the inducement video, screening video, supply and demand video. Come to live, backtest, forward test, whatever doubts you get, you ask us. We will help you understand where you have gone wrong. Then you can look for an execution. Do you have any course? No, we don't sell any course. We have only one-on-one sessions.
दिखा दो सर एक बार लाइव में। भाई लाइव में क्यों दिखाऊंगा? लाइव में सीखने वालों को वो क्यों चाहिए? वो बोलो। Whoever learns in live will learn in live, no? I don't want to promote at first place. ग्रुप है। हाँ ग्रुप है। टेलीग्राम मैसेज कर दो, आ जाएगा, ग्रुप में ऐड हो जाएगा। I've gone through the entry. I have gone to the entire learning on MC2 and applied it on ETH, starting with daily, then 4 hours, then 1 hour, then 30 minutes, and then 15. Yes, Samarth, how is it going so far? That's good. Good to hear. And कितने दिन के लिए किए हो? Do let me know that as well. How many months charts you have done? Hit the like button, guys. Started from Jan. And in 15 minutes, uptrend levels. So it is correct, right? So daily and 4 hours, it is having downtrend. And in 15 minutes, uptrend levels. Is it correct, right? Jan से शुरू किया हो, correct? Daily time frame, wave is bearish. 4 hours, 4 hours. Tide is in POI. 1 hour, 1 hour is in POI. 30 minutes, 30 minutes market is in POI. 15 minutes market is in POI. There is no trend in 15, 30 and 1 hour. The market are in the POI range. Okay. The trend was till only March 11th. March 11 के बाद से आज तक, which is the third day running, the market is in the POI range. The POI range starts from 1960 से लेके 1840 तक है. Keeping in mind 120 points का gap है, which is tradable. But analysis wise, the market is in the POI range. Okay. And guys, people who are trading in crypto, right? So let me give you the chart names to work on. People who trade in crypto, work on BTC analysis, MC2 for 4 years. Okay, उतना time नहीं है. Do it for 2 years. Okay, do it for 2 years on a day-to-day basis. Come down to ETH. In ETH, work for 1 year. Okay, same MC2, supply and demand. 1 year chart ranging. Post 1 year chart ranging of this, come to Solana.
Sonala, टंग ट्विस्ट हो रहा है यार। वर्षा, एएनटी के पास एक अपॉइंटमेंट बुक करना। मुरलीधर यार। Solana and XRP, 1 year, right? Post you have done with this. Take two meme coins. Do only 3 months. So you will understand why I say don't trade in 3 months. Sorry, don't trade in meme coins, right? So in meme coins, do 3 months for two charts. One is Dodge, another one is Shiba, another one is currently which is running. कौन सा था वो? Trump coin. Okay, community of Trump. Okay, so ये तीन कॉइन पे 1 month करके एनालिसिस करना, right? So XRP Solana for 1 year, ETH 1 year to 1.5 years, BTC for 2 years. With BTC, there is another coin which you can work on, which is called as Caradon. Caradon is just for the analysis perspective because markets tends to move in a range. ठीक है, तो ये आप कर सकते हो 1.5 years. So these are the things that you can work in the circumstances people who trade in cryptos. To understand the right analysis, you guys can work on this structure. Post this, what is the next thing that you guys have to do? People who trade in gold. People who trade in gold will work on gold 7-year charts, analysis of MC2, previous year chart for analysis of mathematical edge. आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिखेंगे, ऊपर नीचे दिखेंगे नंबर्स, राइट? बिकॉज मैथमेटिकल एज हैज स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर, तो जस्ट डू इट फॉर 1 year. Okay, with this, what is the next thing that you guys have to work for? The next two will be working in Indian sessions, people who trade in Indian markets. Beautiful guys, let the market build it down. If this market breaks, the market will come down till the level. सस्टेन होना चाहिए यार, ऐसे विक टू विक नहीं आना चाहिए, मजा नहीं है. मूवमेंट एक शॉट में आने दो. हंस जी, आपका लेवल थोड़ा नीचे से एग्जीक्यूटेड है, तो एमटीएसएल स्ट्रॉन्ग लेके चलना. ओके, बी केयरफुल. सो इंडियन सेशंस, हाउ टू वर्क डायरेक्टली, डोंट जंप इनटू आईएस. ऑप्शंस में डायरेक्टली जंप मत करना. ऑप्शन से पहले जाने से पहले वर्क ऑन 3 categories. Category 1, equities. Select all the top Nifty 50 equities. With top Nifty 50 equities, select mid cap and large cap, top 3 each. Okay. With this, small cap and multi-bagger stocks, you will look into the circumstances of 2 charts each, right? This analysis will be done on only MC 2.0 1 year. Post completion of this equities from the
levels of this allocations come down to future charts. In future charts, look into the perspectives of two categories again. What are the two categories that you will be working on? The two categories you will be working on is Nifty, BNF, Bank Nifty, Sensex. Okay. Post completion of this, then you will come to the indices. After 1 year of chart analysis, you will come down to the next point, that is indices of same Nifty, Bank Nifty, Sensex. 1 year, 1 year, 1 year. This is the analysis that you will be working on MC 2.0. Post that खत्म करके आइए, बताएंगे अगले बार. हाँ. Sir, you said you want to go to ENT, right? Talking from 3:30 till now, यार, continuously. लाइफ में जितना बात नहीं किया वो सब ये जो लास्ट 1 साल से चल रहा है ना, टंग ट्विस्ट होना लग गया है. Small word, the tongues are twisting. Today Nitesh conquered the markets. Great, sir. Thanks for sharing your knowledge and let us know many can be made. Let us know money can be made in the markets. All respect. Beautiful guys. Finally break हो चुकी है. एक शॉट में आओ यार. रुला के दुला के आ रहा है मार्केट. इतना इतना नॉलेज तो 2 हफ्ते में नहीं आएगा. Sorry, I was wrong judging you. Thank you, sir. Finally, you understand. And sorry तुक्का बोलने के लिए. वो सब हम बुरा ही नहीं मानते सर. Beautiful guys. Keep it up. Is SKR follow the MTSL points with the SLs. Sorry, with the TSLs. 2,400 points running. So true. Marvich, true. हंस का भी यहाँ पे 1,000 points running में. Great. तो सिर्फ अगर होता तो he could have been saying that he had executed a trade. I think he closed, I guess. That's totally fine. Imran, MTSL point at 81,850 and TSL point at 82,286. Targets will be held till the plan of action of the mathematical concept 2.0. That is at the level of 80,447.73. Samarth,
if I've ignored a question, right? So I just want you to learn and get perfect at something first, right? POI range, definitely I will teach you. I'm not saying I'll not teach you, right? So get great at first thing, right? Then we will move to the next thing. Everything can't be mixed in a go. ओके, शॉर्ट एंड सिंपल के लिए अभी जो बता रहा हूँ, मार्केट्स में तीन टाइप होता है. ओके, सो मार्केट इज इन थ्री टाइप्स, राइट? वन, टू, थ्री. ओके, so where the market tends to move from one point of action to other point of action is called as consolidation zone, and with the consolidation zone you can call it as sideways markets as well. Second point of thing, what the market will do, market will be in a range where you will see inducements and groups, where you will see lot of wick creations, where you will see market in the ranging between a point, right? एक रेंज के अंदर, उसके साथ मूवमेंट उसी रेंज के अंदर यहाँ पे खेलता रहता है, राइट? सो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड होके उसके अंदर उसके बाद खेलता रहता है, विक लेता रहता है ऊपर से नीचे से, right? That is a POI range. With the POI range, last comes as an inducement where you will find a partner or a group, right? So these are the only three types of movements you find in the markets. So the POI range is this, right? Let me showcase you one example as well, right? What do you notice यहाँ पे? आपके पास यहाँ पे टॉप लाइन है, आपके पास यहाँ पे बॉटम लाइन है, राइट? मार्केट क्या किया? ऊपर से नीचे खेला? नहीं, बीचों बीच में खेला है, राइट? इंड्यूसमेंट बिल्ड किया है, लिक्विडिटी हैंड किया है. सो दिस इज अ पीओआई रेंज, दिस इज नॉट अ साइडवेज जोन. हाउ डू यू लुक फॉर अ साइडवेज जोन? साइडवेज जोन जहां पे मार्केट एग्जैक्ट फॉलो करके चलती है, राइट? जैसे कि इस पॉइंट ऑफ एक्शन में, डू वी हैव अ प्रॉपर मूवमेंट ऑफ अलोकेशन ओवर हियर, राइट? दिस वाज आवर low point, this was our high point. What did the market do? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे. This is a consolidation zone. Okay? Post consolidation zone comes as an inducement range, जो आप लोगों को पता है. ऐसे ही हंसते हंसते, खेलते खेलते, चलते चलते, टारगेट्स की तरफ बढ़ते बढ़ते, टारगेट्स TP4 हिट होने वाली है in the next move, which is 80,850. 81,815 पे TSL रखा है. नहीं नहीं, 81,850 पे अभी आपका TSL होना चाहिए, MTSL आपका होना चाहिए 81,550 पे. ओके, 81,850 will be your TSL range, 81,550 will be your MTSL range. 2,700 points running, great, keep it up.
2,700 points, 300 pips in gold. Boom. Next target तक hold करो. 89, 80, sorry, 29, 89 is the next target. Sir, I am in high FOMO. What to do? सिस्टम पे दो बटन्स मिलेंगे आपको, ऑल्ट F4 करके. ओके, दोनों को साथ में दबाओ. उसमें ऑप्शन आएगा शट डाउन. एंटर दबाओ. राइट, सिस्टम बंद कर दो. बुक्स रीड करो. गो फॉर ए वॉक. स्पेंड टाइम विद फैमिली. फोमो नहीं होगी. अगर भाई मिस्टेकली भी माउस ऐसे लेके जाके कर्सर पे रखा ना बाई सेल करके, आप गए. समझ लीजिए. फाइनली बड़ा विक दिखने को मिली. अगर क्लोज होता है ये बड़ा विक, वी विल एग्जिट. हाँ, बीटीसी ट्रेड एवरीवन, वी विल एग्जिट if this conversion happens. S2 बिल्ड कर रहा है 1 आवर पे. ओके, अगर नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूटी में ऊपर के लिए जाता है 1 आवर में, सो इट विल बी कॉल्ड एज त्रिशूल. राइट, त्रिशूल में क्या होता है? मार्केट रिवर्स. क्या हो गया नीलेश? हिट द लाइक बटन गाइस, ऑल द न्यू मेंबर्स. जो भी डाउट है पूछ सकते हो. विद दैट, keep in mind, execute the trades fearlessly with the proper risk management. Trade emotionlessly. Follow the rules. जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Carry the poker face when you're in the trades. So you train your mind and train your subconscious mind to get into the positions of holding. One good trade is the trade that is executed with a proper strategy, following through the mathematical directions, well, well waiting in the directions, locating the supply and demands, and exiting at the point of actions of the targets. नितेश, ज्यादा ही टंग ट्विस्ट हो रहा है. यस अरुंधति मैम, समझ गया. मैं कल ही समझ गया था. डोंट वरी, इट विल बी सॉर्टेड बाय टुनाइट. मैक्स टू मैक्स बाय टुमारो मॉर्निंग. When did you speak this much last time? कभी नहीं. मीटिंग्स में भी मैं बात नहीं करता था मैम इतना जितना अभी जो बात कर रहा हूँ ना. So I am a person who is to go in a track pant and a pullover to the meetings where others used to come in suits. Imran will be like, मेरा MTSL तो नहीं गया. So you're taking breaks in between or you're continuously teaching? No ma'am, 3:30 I start LTD. Right, LTD शुरू होता है. उसके बाद वन ऑन वन सेशन शुरू होती है 7:30 को. 7:30 से 9 o'clock तक फर्स्ट बैच होता है. देन वी कम आउट इनटू द लाइव. राइट, लाइव में नॉर्मल बातें होती है. उसके बाद
फिर से it starts by 12:30. 12:30 से लेके 5 o'clock तक कंटिन्यूस रहती है. 5 o'clock to 9:30 I do over here, right? Sometimes 8. Suppose that I will be having the sessions again till 10:30, depending on the Zoom schedules, working on it. Yes, save now. Great, Imran. The first 2000 plus point capture, right? So you don't take breaks in between. No, ma'am, not at all. Not a age to take the break. Sir, do you travel? Oh, yes. I love traveling. The last trip, the recent trip, the recent trip was to Swiss. स्विस के पास दुबई भी था. दुबई सब ट्रिप थोड़ी है. You can reach Dubai in 4 hours. Haha, yes. ये वरुण और नीलेश क्या हंस रहे हैं? कॉमेडी कुछ किया क्या मैंने? Anyways, stream will be there for next 15 minutes. जो भी डाउट है पूछ सकते हो. गोल्ड में नेक टू नेक MTSL ट्रेलिंग लेके जाना वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्विंग, प्लीज मेक श्योर स्विंग ट्रेडिंग को कैरी फॉरवर्ड करना है. जो जो लोग देख रहे हो, ओनली वन थिंग इन माइंड, 150 pips should be your take home. Okay. Sir, I've been trading in gold only, but very limited entries. I'm concentrating in learning only at this stage, maybe till this weekend only. There are many loose ends, but I am much better now compared to last week. Great, great, Mahesh. Keep it up. We were laughing at the solution for FOMO. Okay. नहीं यार, इधर दो दो बार हंसी आ रही है उसके लिए. फर्स्ट टाइम हंसी आई वो समझ गया था, सेकंड टाइम की वजह से समझ में नहीं आई. रचित कोई डाउट है? ऋषभ कोई डाउट है? ओके, स्लो मोड ऑन है. हटा दो यार वर्षा स्लो मोड. सब क्या है ये स्लो मोड? When life is moving in fast forward, why are you owning a slow mode option? Let that also move in fast forward. जिनको भी स्विंग ट्रेड में लेके जाना है, सबका TSL यहाँ पे रख के लेके जाओ 2989 तक.
Okay, first step for you guys will be holding the trade till tomorrow. ये BTC स्ट्रीम क्लोज करने से पहले ही टारगेट हिट करेगा, इतना तो पता है. For me, MC1 gold next target is 2998.26. Low used is 2930.965. गलत लो है. The low is wrong. Come down to 1 hour. In 1 hour, first allocate the major thing. Right? Your next low is at 8281.511. That is your next low. Okay? Yes, that was the reason. MC1 explanation tomorrow, definitely. कल होली है ना? Anyone going to play Holi? अगस्त इसको पीने मत देना वहां पे. जो LTD में मैसेज करता है वो लेके आके इधर लाइव पे डालता है. Yep, going to Sky. Thank you for getting the entry. Of course, yes sir. मजे कीजिए. बुरा ना मानो, होली है. नहीं नहीं. अंबिका नहीं नहीं. दैट इज अ रॉन्ग थिंग. लाइव में हूं मैं, नहीं तो मैं उसका जवाब देता, सही से जवाब देता. Happy Holi to all in advance. Happy Holi, guys. Happy Holi. How do you know people in Dubai? My major investments are in Dubai. Sorry, second major investments are in Dubai. Numbers गलत हो गए थे. Happy Holi to all.
Hit the like button, guys. Beautiful moment coming in. Gold again started. 1 hour कैंडल क्लोज होने में 1 minute 52 seconds है. नेक्स्ट फिर से एक रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में आएंगे. ओके okay? अगर कंटिन्यूटी रिजेक्शन लेना है तो रिजेक्शन शुड कम टिल दिस पॉइंट 2965 या 2970. 50 pips to 80 pips is the range what we are looking at. हाँ, बड़ा मूवमेंट चाहिए तो यस दैट्स राइट. अगस्त्य, ये दो लोगों को देख लेना, अंबिका एंड वरुण को पार्टी में कर प्लीज. बच्चे बच्चे. हाँ, the great part is Ambika's dad is coming. No, not an issue at all. श्रीवास्तव को और अलीन कर लेंगे. I'll talk to sir. सर एक चीज पूछनी थी, बुरा ना मानो तो. पूछो ना सर, हम किसी बात का बुरा नहीं मानते. क्या है नाम? One more funny name. वॉरेन बफेट. भाई साहब. बताओ सर. मिस्टर WB. I'm trading in the markets from last 4 years. Never seen the concept that you're trading. Loving it. But one problem. I don't have time for back testing, forward testing, and live testing. Can you please give me tips to execute the trades? Bhul jao sir, not the stream. You can find a place anywhere else. Happy Oli, everyone. Wish you all happiness and good health. Sir, are Indian sessions closed tomorrow? Yes, Indian sessions are closed tomorrow. Will we be having the stream? Definitely, yes, we'll be having the stream. Happy Holi by Samar. एक ड्रॉप दे दे यार, स्ट्रीम क्लोज करेंगे. सर आप जस्ट आधे घंटे पहले बोले थे टारगेट से 400 पॉइंट ऊपर रहता है तो भी चलेगा. आप क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्योंकि हम छोड़ने वालों से नहीं है. छोड़ने वालों में से नहीं है. जब तक मार्केट इंडिकेशन नहीं देगा मैं छोड़ूंगा नहीं. Beautiful guys. 400 pips running in today's market of gold. Great. Okay, ये थोड़ा खेल रहा है. Previous comment as per Mr. Smita ma'am, sorry, Miss Smita ma'am, we will be exiting the trades and closing this. True, MC1 low is 2880.250. My mistake. No worries, Mahesh.
Don't repeat the same mistake for more than 4 times. Okay? Keep in mind, protect your capitals, make sure that you execute the trades in the right direction following the mathematical concepts. With that, trade fearlessly, execute the trades with the proper risk management. With the risk management, trade emotionless. Jitne se kushi manana, harne se dukhi manana is not the quality of the traders. Make sure one good trade is not about winning or losing. It's about taking the trades in the right direction, following the strategies, following the movements of the markets, and holding the trades till the targets. मिलते हैं कल सुबह तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय गुड नाइट नितेश signing off. Thank you all.